हेलो स्टूडेंट्स। पिछले एपिसोड में लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। वी हैड अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल विच इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल चैप्टर ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी। और हम लोगों ने वहाँ देखा था that if the zeros of cubic polynomial are alpha, beta and gamma, then alpha plus beta plus gamma means sum of zeros is equal to minus b by a. Alpha beta plus alpha gamma plus beta gamma is equal to c by a, and alpha beta gamma equal to minus b by a, where ax cube plus bx square plus cx plus d was the polynomial. तो उसी के आधार पर एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल, एक्चुअली ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है उसमें क्वेश्चंस आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट समटाइम्स वी हैव फाउंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. So students are expected to solve all the problems of optional exercises also. So let's try our best to solve all the questions. Number 1 लिखता है कि verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case. दो टुकड़े में ये क्वेश्चन है. एक की पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल के 3 जीरोज दिए गए हैं, अल्फा बीटा एंड गामा. हम लोगों को देखना है कि वो इसके जीरोज हैं कि नहीं. और अगली बात ये है कि जीरोज अगर हैं तो कोएफिशिएंट्स के साथ उनका रिलेशन प्राप्त करना है. आइए हम आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में. एक्सरसाइज 2.1, ये 2.4 optional. This is optional. So number 1 px दिया हुआ है, पॉलिनोमियल ऑफ x. मान लीजिए कि हम लोगों ने इसको px लिखा, बुक में दिया हुआ है कि 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और जीरोज दिए हुए हैं 1/2, 1 एंड -2. हमको इन्हीं को चेक करना है कि ये जीरोज हैं कि नहीं हैं. आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये जीरो हैं कि नहीं. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से पहले p1/2 निकाल कर देखेंगे कि ये जीरो हो रहा है कि नहीं. जहां जहां x है वहां पर 1/2 रखने पर तो ये हो जाएगा 2 × 1/8 प्लस ये हो जाएगा 1/4 माइनस हो जाएगा 5/2 प्लस 2. यही क्लियर हो जाएगा. ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4, ऐड होगा तो 2/4 हुआ. 2/4 का मतलब 1/2 हुआ. 2 प्लस 1/2 5/2 माइनस 5/2 इक्वल टू 0. So definitely 1/2 is the zero of this polynomial. And next one is p1. So what to do? 2 plus 1 minus 5 plus 2. Let's see whether it comes 0 or not. 2 to 4, 1, 5 minus 5 equal to definitely 0. And the last one minus 2. So 2 2 ja 4, 2 ja 8, 2 ja 16, minus 16 will be here. Plus 4, plus 10, plus 2. Let's see what happens. 10 plus 6, 16 minus 16. So these are the zeros of this given polynomial. Now the second part of the question tells that to establish the relation between the coefficients and the zeros. So what we will do here, इनका ऐड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर करते हैं हम लोग तो ये आएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 2. तो इनको ऐड करने पर ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2 आया. अब देखना है, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस b बाई ए. तो 1 यहाँ है, यहाँ पर है, ये b का कोएफिशिएंट है.
माइनस कोएफिशिएंट ऑफ बी, बी बाई ए, और ये देखिए यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, ये रिलेशन आ गया। और वैसे ही एल्फा बीटा, एल्फा गामा, बीटा गामा, टू का मल्टीप्लाई करके यहां रख करके ऐड करके देखते हैं क्या होता है। इसमें इसका मल्टीप्लाई देगा 1/2, प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई देगा -1, प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई देगा -2। सोल्व करने पर क्या मिलता है, ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा -5/2। और हम जानते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गामा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, इसका वैल्यू होता है c/a। देखा जाए c क्या है, c इज डेफिनेटली -5, तो ये c/a है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x, वी विल राइट हियर कोएफिशिएंट ऑफ x, बट a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, एंड लास्ट वन इज अल्फा बीटा गामा, तीनों का ही मल्टीप्लिकेशन 2 से कैंसिल होगा, आ जाएगा -1। ये हम -1/1 रख के देखें, -d/a, यहां पर d है 2, तो 2 रखने के लिए सेम थिंग कैन बी रिटन लाइक दिस। अब इसको दिखाना असंभव है कि यह है कांस्टेंट टर्म बटे -d/a, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो in this way we go on solving this question. So students are expected to learn it well, practice it well, and also students should solve this type of questions their own. So now let's take this second one. So for that, let us rub it out, इसको मिटा करके अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। वो भी ठीक ऐसे ही है, एक फर्स्ट क्वेश्चन में 2 दिए गए हैं क्वेश्चंस, उनमें भी हम लोग 0 रखेंगे और फिर उनका हम लोग रिलेशन चेक करेंगे कि वेदर रिलेशन comes to be true or not. If they are found to be 0, then only we will have to establish the relation. So x cube, here is x cube. Second question of 1, let px equal to x cube minus 4x square plus 5x minus 2, and zeros are to be tested for 2, 1 and 1. So let's see what happens if we calculate p2. Then what happens, because 2 is here, so 2 to the 4 to the 8 minus 2 to the 4 for the 16 plus 2 5 the 10 minus 2. So 8 and 10, 18, really it is 0. Or also next one, to p1 we have to do. So once again, 1 minus 4 plus 5 minus 2, how much it comes? Definitely 6 minus 6 equal to 0. That is the same thing. One is twice here. So we have got alpha, beta and gamma. Well, definitely hence or thus 2, 1, 1 are zeros. Now let's establish the relation alpha plus beta plus gamma. It will be 4 by 1, and we know that alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a. So see here, minus 4 by 1, that is minus coefficient of x square by coefficient of x cube, and here is next one, alpha beta gamma, alpha gamma.
So 2 1 ja 2, 2 1 ja 2, 1 1 ja 1, 5, 5 by 1. We know that C by A should come here. Where is C? C here. So 5 by 1. Definitely we have got coefficient of x, but a coefficient of x cube. And last one, alpha, beta, gamma. This is, what should it be? 4 by 1. Let's see whether it is equal to minus d by a or not. So 4 by 1, and here it is minus 2. So where from it came 4? Not 4, 2. 2 1 ja 2 1 ja 2. 2 by 1. It should be exactly 2 by 1. So this is 2 by 1, and definitely we will write minus d by 2 means constant term by coefficient of x cube. So students, in this way we can show the relation between the coefficients and the zeros of this given polynomial. So now let's start the second question. We have to find a cubic polynomial with the sum of the product of zeros taken 2 at a time and the product of zeros 2, minus 7, minus 14. It's very easy to write. Actually, the students have to understand what sort of things have been given, and after that what we are going to do. Unless these both things are clear, we cannot solve the questions well. So here we have been given alpha, beta, gamma, alpha plus beta plus gamma, and alpha, beta, everything, alpha, beta, beta, gamma plus alpha, beta, alpha, gamma. So everything are given to us, and we have to simply write the polynomial, and we know that the polynomial is given by x cube. So is to given cubic polynomial sum alpha plus beta plus gamma is given minus 2. Alpha, beta, gamma, alpha, gamma is given minus 7. Not minus 2, only 2, minus 7. And alpha, beta, gamma is minus 14. And we have to write the cubic polynomial. So we can write like this. We know that the cubic polynomial is written like this. X cube minus alpha plus beta plus gamma x square plus alpha, beta, gamma plus alpha, gamma x plus alpha, gamma x minus alpha, beta and gamma. So on this performer or pattern, we have to put these values to get the required answer. So that comes like this: alpha, beta, gamma 2x square plus this one is minus 7x minus 14. Minus 14 is here. So let us finalize it. It should be kx cube minus 2x square minus 7x plus 14, and it is the exact, it is the answer. Here k stands for some constants. So this is the polynomial where alpha plus beta plus gamma will be 2, alpha, beta plus beta, gamma plus alpha, gamma will be minus 7,
and alpha beta gamma will be minus 14. So the third thing, if the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, find a plus b. So let's do it. Zeros have been given here, and we have to find the value of a and b. So the third question. Now is the turn of the third question. So the third question is here. Polynomial is px third, px equal to x cube minus 3x square plus x plus 1, and zeros are alpha. Suppose alpha is a minus b, beta is a, and gamma is a plus b. So students, we know that alpha plus beta plus gamma should be minus b by a from here, and from here let's see what do we get. Alpha plus beta plus gamma. As soon as we write here like this, so something is sure to be cancelled. Nothing is cancelled. A plus b is here, no? So yes, definitely b will be cancelled. 3a. From the question, alpha plus beta plus gamma will be minus b by a. Also, alpha plus beta plus gamma will be minus 3 by 1 or 3. Hence 3a equal to 3, therefore a equal to 1. This is the first answer. Now alpha beta gamma, let's do it. See what happens. A minus b into a plus b. Keeping in mind the value of a equal to 1, we will go ahead. So here we will be getting a into a square minus b square, because this product is a square minus b square. And from the question, alpha beta gamma minus d by a. So definitely it will be equal to minus 1. Now this is the important equation we have got, and here in place of a we will write 1. So it comes like this: minus b square equal to minus 1, or 1 minus b square equal to minus 1, b square equal to 2, b square equal to 2, and b is plus minus under root 2. So these are the values, these are the answers of a and b. So keep on watching my video, and with more or leftover questions I will be back very shortly. But please don't forget to subscribe and share my channel. Wait for the question number 4 to come, and I will be back very shortly. Till then, thank you very much.